Okay. So yes, in last class I taught you when you will define the variable. Okay. So we have two types of variable. So if you are defining the variable on the basis of scope, so we have local variable and global variable. Okay. And we also have a variable on the basis of data type. Okay. So we have primitive type variable and second which we have reference variable. Okay. So we have primitive and reference variable. So I'm going to write some, you can say some example, and then we will check how, where we will use the primitive variable, what is primitive variable, and where we will use the reference variable. Okay. So I'm going to write this some example. Okay. So let's suppose I'm defining some variable. First is we have A's. Okay. And let's suppose if I'll ask to you which data type I'm using for age variable. So I'm using integer data type. Okay. So integer it's the data type. So which type of data type it is? Is it? It's the primitive data type. Okay. If I'll ask you what is age, integer is it's the data type. Which type? Primitive. What is age? Age it's the variable. Okay. Now I am asking which type of variable is it? So it's the primitive variable. Okay. So it's the integer data type. Age is the variable. Which type of data type? It's the primitive. And which type of variable? It's the primitive variable. Okay. So all the data type which are starting from which are primitive type. Okay. So all the variable from which you can say all the variable which we are creating with primitive data types, that is known as primitive variable. So whatever the variable you will create with primitive data type, these are the primitive variable. Let me write it's the data type. Next we have type of data type. So is what is it? It's the variable, primitive variable, type of variable. Okay, fine. So now what I'm doing, I'm writing second, you can say variable, that is name. So string, which type of data type it is? Primitive, non-primitive? Non-primitive. 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 Okay. So variable name is age, but which type of variable it will be? So variable name is name. Name. Yes. So which type of variable is it? It's also It is primitive variable. Okay. So string, the data type of means which type of data type is it? It's the non-primitive data type. But which variable we will create for string data type? That is primitive variable. Okay. It's not the reference variable, it's the primitive variable. Let's suppose we have one class. Okay, and you can say we have one class or object account, and I'm writing account acc is equal to new account. We write account acc is equal to new account. Who know Java and this apex, they know how
we define the object, it's the way. And who don't know the Java, so they know how we call the class. Let's suppose if we have created one class, that is first class, so how we will execute it? Okay, so what we will do, we will create one instance for the class. So fc, what is it? It's the reference variable. Okay, so how we will define the class? First, class name, reference variable is equal to new class name. How we will define the object? Eh, object name is equal to new object. So it's a way. Okay, so here, what is the data type? Data type is account. Okay, and type of data type, which type of data type is it? It's the primitive or non-primitive? It's the non-primitive. Then which type of variable name? ACC. Okay, type of variable, which type of variable is it? It's the primitive variable or another variable. So it's the Non reference variable. Okay, Yep. so anything you can say, it's the reference variable. So when you will create the instance for the class like that, so you will create the reference variable. It's the reference variable. Okay, ठीक सर है, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। पूछो। सर उस दिन आपने बोला था कि रेफरेंस वेरिएबल से हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। मतलब स्टोर नहीं करते। मतलब जैसे ये अकाउंट है, एसीसी नेम हो गया इसको, इसका, हम्म तो हम्म हम इसके नेम से हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अकाउंट के नेम से। हाँ, आपने हाँ उस हाँ दिन ऐसे बोला था ना सर, बट उसमें कंस्ट्रक्टर में तो हम कर सकते हैं, जैसे हम पब्लिक अकाउंट, अकाउंट का नेम लेते हैं, गेट हाँ सेट हाँ, लगा के, फिर हम कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं वेरिएबल से। ठीक है। एक बार दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करो, मैं लिखूंगा जो, ठीक है, जो समझ सके। जैसे पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट, एसीसी गेट सेट एसिस, मेथड, गेट सेट, ठीक है। फिर हम कंस्ट्रक्टर में इसके वेरिएबल से इसको फिर इनिशियलाइज करते हैं। लाइक दैट एसिस इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, ठीक है। यस। हाँ हाँ, मैंने क्या बोला था? आपने बोला था कि रेफरेंस वेरिएबल से हम कभी भी इनिशियलाइज नहीं कर सकते। कोई है जो मैंने मतलब कुछ ऐसा बोला था? ठीक है, अगर बोला भी था तो अब देखते हैं क्या है ये, ठीक है, जो भी है। सर मैं उसी मैंने दिन समझ, पूछती, बट उस दिन क्लास ओवर हो गई थी, फिर मुझे लगा कि मैं वापस पूछूंगी। तो सर कुछ ऐसा बोला था क्या मैंने? मैंने बोला था रेफरेंस वेरिएबल दोनों जिक्र किए थे। सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, नहीं मैं सर। बता दूंगी सर। ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग देख के बताना। मैंने बोला था प्रिमिटिव डेटा टाइप से जो वेरिएबल होते हैं उनमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इसमें जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं उनको डेटा स्टोर नहीं करते, रेफर करते हैं। सर अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको वीडियो क्रॉप करके भेज दूंगी, होगा ठीक है तो। बिल्कुल मैम, मुझे आप टाइमिंग बता देना, नहीं मैं तो देख। मेरी गलती होगी, या तो फिर मैंने गलत सुना होगा तो। हाँ, आपने कुछ, मुझको भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि मैंने इस बारे में कुछ जिक्र नहीं किया था। सर इसीलिए पूछा मैंने, शायद मैंने गलत सुन लिया हो तो कंफर्म करने के लिए कि हम रेफरेंस वेरिएबल से इनिशियलाइज कर सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल ही बोलते हैं मैम उसको, इनिशियलाइज करते समय जो वेरिएबल होगा वो रेफरेंस वेरिएबल ही तो है। नहीं, जैसे आपने बताया था, जैसे क्लास को कॉल करते हैं ना तो रेफरेंस वेरिएबल होता है। क्लास को कॉल फिर करना भी हम, रेफरेंस वेरिएबल होता है। ऑब्जेक्ट, अकाउंट भी तो एक क्लास, अकाउंट वो है ना अकाउंट। जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, रुको अभी पहले मुझे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप खत्म करने दो, ठीक है। ठीक है सर। लेट मी कंप्लीट इट देन यू विल आस्क द क्वेश्चन। ओके, सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप जब खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट यू हैव ट्राइड द डेफिनेशन ऑफ primitive variable. Okay, so any variable created with primitive data type you can say it's known as primitive variable. हाँ, कहाँ लिए? Mukul, mute yourself.
Okay, so primitive variable, why we use it? We use to store the data. Okay, so we will assign the data to primitive variable, or you can say we will store the data in primitive variable. Example, you can write integer age 01. Okay, what is non-primitive variable? Okay, so you can say any variable which we create with non-primitive data type, it's known as reference variable. Okay, okay, so accept string, any variable created with non-primitive data type is known as reference variable. Okay, so by reference variable, we will not create the memory. What we will do, we will refer to the memory. Okay, so we will not store the data. What we will do, we will refer to the location with the help of reference variable. So it will refer to the location, okay, where data is available. So an example which you will write. Okay, so objacc, what is it? It's the reference variable. It's the reference variable. ठीक है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और वेरिएबल में किसी को कोई डाउट है? No, sir. Good. So we were studying list, okay, and set. So first, what I'm doing, I am going to open the debug, and I'm going to write the definition of the list and set. Okay. So if you have to add any value in list, how can you add it? Add method. So we will use add method. Okay. So what I have done, I have created one list and set. How can we create the list and set? You know very well. Okay. First, we will write the list of data type, then variable name
or set name, whatever you want to say. Then you will write operator. Then you will use new keyword, and you will again write set of data type. Okay. Then separator. So it's a way. So first, I want to know what's the difference between list and set. Okay, first we will learn. So what I'm doing, I'm going to add some value in list. Okay. So when we will write the definition of the list, we can say in list we can store duplicate data. Okay. And the second point, which data we will store, it will be in a order. Okay. I'm also going to write the definition of the set. So in set, we can't store duplicate data. Which data we will store in a set, it will, it won't be in a order. Okay. So I'm going to add some value in list. So I'm adding 1 and going to add some value. So 1, 9, 7, 5, 10, 9. Okay, going to save it. So there is no error. Now what I'm doing, I'm going to add some value in set. So set name. Okay. So now what I'm doing, I'm going to debug it. I'm going to debug it. So I'm writing system.debug. Okay. So list items. So list items are available inside the list. So what I'm doing, I'm going to write the list name int list. Then second, I'm going to debug the set. So copy the code, paste it here, and write the set name. Okay. So any idea what output I'll get when I will debug it? In list, we got 19759. 19759. 59. In set But in set, you got 1579. 157. Okay. Yes. So I'm going to debug it, then we will check same output we are getting or not. So session class name, create reference variable for the class. Then if method is, you can see non-static. So copy the method name, then execute it. So I'm going to execute it, clicking on debug only. And what I'm getting 19579 1579. ठीक है, तो आउटपुट सेम आया जो मिश्रा जी ने बोला था. ठीक है. नाउ अगेन वी विल स्टडी द डेफिनेशन. ठीक है. अब देखो इसमें इन फर्स्ट वन in list we can store duplicate data, so we are able to see 9 two times. So 9 is coming two times. In set we can't store duplicate data, so I'm getting 9 once time. I'm not getting duplicate data. Okay. पहली डेफिनेशन समझ में आई. सेकंड डेटा, विच डेटा वी विल स्टोर इन ए लिस्ट, इट विल बी इन ए ऑर्डर. ठीक है, जो डेटा हम लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं वो ऑर्डर में होएगी. ठीक है. बट विच डेटा यू विल स्टोर इन सेट, इट विल नॉट बी इन ए ऑर्डर. ठीक है. ये लाइन सभी को Sir, समझ में. sir, I will be back in 10 minutes. ओके ओके नो प्रॉब्लम. ठीक है, लिस्ट में जो डेटा स्टोर करोगे वो ऑर्डर में होएगा.
सेट में जो स्टोर करोगे वो इन ऑर्डर में होगा। ये बात समझ में आई कि कैसे ये ऑर्डर में है या नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं कि ये ऑर्डर में? लिस्ट इट इज इन ए ऑर्डर। It's not an Yes, order. sir. ओके, अकॉर्डिंग टू मैम इट्स नॉट इन ए ऑर्डर। ठीक है। सर लिस्ट ऑर्डर पे है। हम्म। जैसे ठीक है। आपने स्टोर Yes, so किया तो list is a ordered collection of element. Yeah, ठीक है। list is ordered the way we have added in the list of. अब कोई मैम को समझाएगा कि मतलब कैसे, मतलब ऑर्डर में कैसे होती है लिस्ट? So first is zeroth index and second is first index and third इंडेक्स index. सर Second, so index wise. ठीक है। Understood. ठीक है। नहीं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं और एक सेट का। ठीक है। एग्जामिनेशन। ठीक है। कॉलेज में हम किसी में एग्जाम चल रहा है कॉलेज में। ठीक है। तो दो टीचर हैं। ठीक है। दोनों को अलग अलग रूम मिले हुए हैं। तो एक टीचर क्या कर रहा है? ठीक है। लिस्ट फॉलो कर रहा है। ठीक, मिस्टर ए है टीचर का नेम। ठीक है, ही इज फॉलोइंग द लिस्ट एंड वी हैव सेकंड टीचर दैट इज मिस्टर बी, ही इज फॉलोइंग सेट। ठीक है। तो जो मिस्टर ए हैं, ठीक है, वो सर क्या करते हैं? ठीक है, बच्चे आ रहे हैं। पहला बच्चे ने एंट्री ली रूम में, बोली पहली सीट तुम्हारी है, बैठ जाओ। दूसरे बच्चे ने रूम में एंट्री ली। ठीक है, दूसरी सीट पर बैठो, तीसरी सीट पर। ये पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। ठीक है। इस तरीके से बच्चों को बैठा रहे थे। ठीक है, तो मिस्टर ए ने बैठा दी सारे बच्चे। ठीक है। तो लिस्ट क्या करी? जिस ऑर्डर में बच्चे आ रहे थे, जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे उस ऑर्डर में बैठाते गए। ठीक है। अब सेकंड क्या था? ठीक है, सेकंड थे मिस्टर बी, जो सेट को फॉलो कर रहे थे। ठीक है। सेट मतलब वो बैठा रहे थे स्टूडेंट को रोल नंबर के बेसिस पे। ठीक है। तो पहला स्टूडेंट आया, ठीक है, उसका रोल नंबर क्या था? 5। उसको बैठा दिया पहली सीट पे, जैसे ही वो आया पहली सीट पे बैठा दिया। ठीक है। नाउ सेकंड स्टूडेंट इज कमिंग, रोल नंबर इज 7। वो बैठा दिया, ठीक है, दूसरी सीट पे। तीसरा स्टूडेंट आया, 8 रोल नंबर था, तीसरी सीट पे। चौथा स्टूडेंट आया, ठीक है, 9 रोल नंबर था, चौथी सीट पे। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आया, पांचवा। जैसे ही पांचवा स्टूडेंट आया, ठीक है, उसका रोल नंबर क्या था? 1। ठीक है। अब वो सेट फॉलो कर रहे थे, रोल नंबर 1 था। तो क्या होएगा? वो जो ऑर्डर चल रहा है उस ऑर्डर में नहीं सेट होएगा। ठीक है। उसका रोल नंबर 1 था, वो घूम घाम के पहली सीट पे बैठेगा। जो पहली सीट पे था वो दूसरे मतलब दूसरी सीट पे चला जाएगा। ठीक है। जो हमारा ऑर्डर था वो ऑर्डर नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो वो ये होता है सेट। लिस्ट क्या है? जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उस ऑर्डर में बैठा हो। सेट मतलब किसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो Okay. इसमें हमें, जैसे कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में पे आ रहे हैं। ठीक है। इन सेट आई एम गेटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर 1579। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि हम किसी ऑर्डर में बैठा रहे। पहले हम रोल नंबर के हिसाब से बैठा रहे थे। ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से हम बच्चों को बैठा रहे थे, 1 2। अगर इसमें 1 से भी कुछ छोटा होएगा तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो लिस्ट और सेट कम। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि लिस्ट Yes, sir. ऑर्डर में होती है, डुप्लीकेट स्टोर कर लेते हैं, सेट अनऑर्डर में होती है। ठीक है। अब सपोज करो कि वी हैव इंट लिस्ट, आई हैव इंट लिस्ट। ओके। हाउ वी विल debug it? We are able to debug it. How we will print in visual force पेज? ठीक है, किसी एक लिस्ट को हमें विजुअल फोर्स पेज में, मतलब कि क्लाइंट को जो है डिस्प्ले कराना है। कैसे डिस्प्ले कराएंगे? इसको डिस्प्ले कराएं, नंबर को, जो भी है। Public list of integer. पब्लिक लिस्ट ऑफ इंटीजर इंट लिस्ट। Int list. ठीक है। गेट सेट पब्लिक लिस्ट ऑफ इंटीजर इंट सेट। ठीक है, गेट सेट। पब्लिक सेट होना चाहिए सर। या so what I'm doing, again I'm not going to define it when we will call the Is method
Okay, so what I'm doing, on click of button, I'll not print the data. When I will reload the page, that time I'll print the data. So I'm going to change the method name also. I'm making it constructor. Okay, so now what I want to print it. So I'm going to create Visual Force page. Click on file, click on new, then click on Visual Force page, write the page name. Okay, हमने जितने प्रिमिटिव टाइप के डेट वेरिएबल थे या डेटा टाइप क्रिएट किए थे विंडो टाइप के सबको हमने क्लाइंट में कीवाई पे डिस्प्ले कराया था. ठीक है, ऑन विजुअल फोर्स पेज वी हैव डिस्प्लेड इट. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ लिस्ट इन विजुअल फोर्स पेज. So how we will display it? Okay, so first if you have created the class, you have to call the class. So control is equal to class name, session class. Okay, so now what you have to do, second tag, always try to use apex form if we are using the child tag of apex form or not. Okay, because there are many child tag of apex form, so it's a good approach to write the form. Then what I'm doing, I'm going to create one page block on no. Here I'm going to create one page block. If you want to create the section header, you can create the section header. Okay, so page block, inside the page block, what I want to create the table. I want to create one table. In a table, I want to display the data because I have too much data. I have 6 7 value. So that value I want to display in a table. Okay, so we have one tag which we use to make the table, that is page block table. apex page block table. ठीक है, जब आप टेबल लिखोगे apex page block table means we are creating one table. Automatically we will get rows and column. But when you will save it, you will get one error message. Missing attribute are not available. Okay, so required attributes are missing. Okay, so there are two mandatory attributes which are available in page block table. First is value, second is variable. First is value, second is variable. Okay, so in value, what you will do, you will pass list type data. In value, you will pass list type of data. Okay, in a list, if you have data, so that list you will pass in a value. So I have data in int list. Okay, so let's suppose if we have 7 value in list. Okay, so I want to print it one by one. So here what I'm doing, I am writing one variable name. Okay, so any name you can write. First, else you can write a only. Okay, The value पे int list उसमें वो नहीं mark हुई है. yeah, so if we are accessing the data of apex class, we have to use expression also. Okay, so inside the table, what you will do, you will create the column. I want to display the data in a column. We have created one table. Table means rows and column. So I want to display the data in a column. So which value you want to store? So whatever the, okay, first we are fetching the data of apex class in value. Then I am sending it to the variable. So whatever the value I will get in variable, I want to display it. Okay, so here I'm going to write it. Value is equal to, write the variable name with expression. Okay, now I'm going to click on the preview button. So whatever the data are in the, you can say list, it will display. So 19759 it is displaying. Okay, so go back and here go to the block, write the title, list example,
I'm going to create second block, that is set example. And here what I'm doing, I'm displaying the data of the set. So we have int set, go to the page, int set, write any variable name p, display the data of p. So what I'm doing, we have table, okay. In page block table, I have written value is equal to list name. Second variable is equal to any name you can write. It's up to you, any name. Okay. Then I'm going to write apex column. And in column, I'm going to display the data of the variable. So value is equal to any name. Okay. So what will happen? Let's suppose we have 5 records or 5 value in a list. We have 5 value in a list. So what will happen? Page block table it will execute, and the first value it will go in the variable. Okay. After that column code will execute, and first value we will display. So what is the first value? First value is the one value will display. Again, what will, after printing the first value, again we will come in value attribute, whatever the second value it will go in the variable. Then whatever the value we are getting in the variable, that value will store, two value will store. Okay, two value will display. Then again we will come in value attribute, there are 5 value, two value we have printed, so third value will go to the variable. Okay, then third value will come, it will display. Next time fourth value will come, then fifth. Okay, so it will work like a for each loop. ठीक है, जब तक ये सारी वैल्यू प्रिंट नहीं कर देता जितनी भी लिस्ट में है ये, ठीक है, ये इटरेट करता रहता है. So it will iterate. So page block table it will work like a for each loop. Okay, in value we will store the list type of information. From value we will send the data one by one to the variable. Okay, first data will go, then first data will print. After that second data will go, second data will print, then third, fourth, fifth. If we have 100 data, so 100 data will iterate one by one the variable, then it all the data will print. So it's a way of displaying the data with the help of page block table. Okay, so if you want to display the list type of information, set type of information, which tag you can use, you can use apex page block table. ठीक है, इट्स द लिस्ट एग्जांपल, सेट एग्जांपल. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। गुड. है ना मैम, समझ में आया सब कुछ? Clear, sir. Yes, sir. गुड. ओके. Okay, so after 1 minute again we will, no, you can take a 5-6 minute break. Okay, then again we will connect at 11:57.